In the previous videos, we have completed the phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and now in this video we are going to discuss the last phylum, and that phylum is Hemichordata. Hemichordata, this is the last phylum of phylum non-chordates. So first, general characteristics. The first point regarding general characteristics कि habitat या members जो है, these are small group of worm-like marine animals. तो कौन से मेंबर्स हैं? So this is, it consists of the phylum Hemichordata consists of the small group of worm-like marine animals. So this is habitat also. Small group कौन से? तो worm-like animals है. That is first. Second, earlier मतलब start में. Earlier it was considered as as subphylum under Chordata. स्टार्ट में इसको क्या कंसिडर किया गया था? स्टार्ट में इसको कंसिडर किया गया था कि सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, बट नाउ आप लोगों को अभी पता है it is currently now it is considered as a separate phylum under non-chordates, right? So earlier it was considered, earlier Hemichordata was considered as a subphylum under Chordata, but now it is considered as a separate phylum. It is considered as a separate phylum under non-chordata or under non-chordates. This is very important statement. Initially it was considered as a subphylum under chordates, but now अभी क्या कहते हैं? But now it is considered as a separate phylum under non-chordates, right? That is the second general characteristics. General characteristics learn करने के बाद, as per our frame, the second point is special characteristics, right? So general characteristics learn करने के बाद we'll discuss the special characteristics. Special characteristics present in the member of Hemichordata. So first special characteristics is कि body कैसी है? तो body is cylindrical. कैसी है? Cylindrical मतलब सिलेंडर के जैसी बॉडी है. Body is cylindrical and body is composed of, body is cylindrical and body is consist of और composed of. क्या क्या है? तो body is consist or body is composed of three structure. First one is proboscis, second collar, थर्ड ट्रंक. इसको आप कंपेयर कर सकते हो आर्थ्रोपोडा, हेड थोरैक्स एब्डोमेन. मोलुस्का, हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प. हेमिकॉर्डेटा, बॉडी सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के जैसी है एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स से बनी हुई है. फर्स्ट पार्ट प्रोबोसिस,
सेकंड कॉलर, थर्ड ट्रंक। अगर इसका डायग्राम हम निकालेंगे तो यू कैन सी, इसका डायग्राम तो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कि फर्स्ट इज प्रोबोसिस, एंड प्रोबोसिस कैसा है, तो प्रोबोसिस इज लुक इज अ मोस्टली इट इज triangular proboscis, that is the first part. Second, there is a narrow part, and that is the second collar region. And from collar region there is another third part, and which is long and cylindrical, and जिसे हम कहते हैं trunk. And there is a presence of anus. At the end there is a presence of anus. So this is the structure of body of hemichordata. कितने पार्ट है, 3. Proboscis, this is triangular proboscis. Second part, this is a narrow collar, and then is a long slender, and that is trunk. So proboscis में क्या है, तो proboscis consist of two part. proboscis में दो part होते हैं. First part is the mouth. Third part is mouth, and second part mouth के below there is a presence of proboscis gland. Right, there is a second, and that is proboscis gland. So these are the two structure. First one is the mouth, and second one is the proboscis gland present in the proboscis. proboscis gland जो है मैं यहाँ पर लिखता हूं कि proboscis gland क्या फंक्शन करती है, तो इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, that is the removal of nitrogenous waste produced in the body. So which is excretory structure in hemichordata? Proboscis gland is the excretory structure present in the member of hemichordata. Right, that is first. Second, collar region जो है कि इन कॉलर रीजन के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, एंड दैट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज गिल्स. गिल्स भी होते हैं, एंड जेनाइटल पोर्स. So there are two structures. First is the gills, and second one is the genital pores. मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड स्ट्रक्चर गिल्स. सो गिल्स का काम क्या है, गिल्स का काम क्या है, तो गिल्स आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. Gills are respiratory structure for which help in respiration. कहाँ है, तो present in the collar region. Another important structure which is present in the collar region, there is a presence of rudimentary structure. ऐसा एक rudimentary structure present है कहाँ पर, collar region में. And that rudimentary structure which is present in collar region is known as the stomachord. Stomachord. क्या है, stomachord. So presence of stomachord is also the another characteristic feature of member of hemichordata. कौन सा, stomachord. मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि so that the all things come in one slide. Right. पहला प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन, सेकंड गिल्स कॉलर रीजन में रेस्पिरेटरी, थर्ड कहा कि इन द कॉलर रीजन देयर इज अ इन द कॉलर रीजन देयर इज अ rudimentary rudimentary structure, rudimentary structure उसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड. क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड. एंड स्टोमोकॉर्ड क्या कहा गया है, तो स्टोमोकॉर्ड इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. राइट, बट यहां पे मैं एक थिंग क्लैरिफाई करता हूं कि ये जो स्टोमोकॉर्ड है, दिस इज नॉट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली द नोटोकॉर्ड. नॉट structurally, not structurally and
फंक्शनली नोटोकॉर्ड, क्योंकि एक वीडियोस में हमने नोटोकॉर्ड को भी एक्सप्लेन किया है कि नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड को कंसीडर करके एनिमल्स दो ग्रुप में डिवाइड हुए, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स विदाउट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड उनमें नहीं होता है। कॉर्डेट्स दे फॉर्म द नोटोकॉर्ड। एंड नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मली डिराइव है, डॉर्सल साइड्स में फॉर्म होता है एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज कॉलर रीजन में, दिस इज रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड, एंड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के जैसा दिखता है। एंड फ्रॉम दैट, बट यहां पे क्लियर किया कि नॉट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली नोटोकॉर्ड। सेकेंड लास्ट पार्ट इज लॉन्ग स्लेंडर ट्रंक, लॉन्ग स्लेंडर ट्रंक, एंड वहां के एंड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नस। So this is the structure of member of hemichordata. कैसा है? Body is cylindrical, consists of proboscis, collar and trunk. Right? Proboscis में दो है, नंबर वन माउथ एंड सेकेंड वन इज द proboscis gland. Proboscis gland का काम क्या है? To perform the process of excretion. कॉलर रीजन में क्या है? तो गिल्स है, एंड गिल्स का काम क्या है? टू परफॉर्म द रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। थर्ड, एक कॉलर रीजन में ये है रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर, commonly known as stomachord, similar to notochord, but not structurally and functionally the notochord. So that is another important thing. Presence of stomachord is the characteristic feature of hemichordata. So these are the very special characteristics of hemichordata. इसके बाद का, as per our design, as per our structure, फाइलम स्टडी करने में जो कुछ भी पॉइंट, जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, राइट? दैट पॉइंट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। उसके पहले इन लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेट, इन लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। कैसा है? ओपन टाइप। ये ऑर्गेनिज्म कैसे है? डायोइसियस, सेक्सेस आर सेपरेट। उसको दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं कि दे आर यूनिसेक्सुअल, दोनों का मीनिंग सेम है, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट। कैसे है? सेक्सेस आर सेपरेट। देन फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि मेंबर ऑफ टेनोफोरा, फ्रॉग, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन लोगों में फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी, राइट? ये आपको एक स्पेशल चार्ट बना के लर्न करना पड़ेगा। सेकेंड, डेवलपमेंट। इन लोगों में डेवलपमेंट कैसा है? इन लोगों में डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। Development takes place through the different larval stages. So development is indirect. So कौन सा है? डायोइसियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? बाहर होता है, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स टेक्स प्लेस थ्रू larval stages. Larval stages takes place through larval stages, and circulatory system is open, right? Then जो पॉइंट लास्ट में बचा है, दैट इज कि कौन से मेंबर्स है? मेंबर्स मतलब एग्जांपल्स, एंड हमें वही एग्जांपल्स लर्न करने हैं जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है, बिकॉज वी शुड बी वेरी स्टिक टू एनसीईआरटी।
क्वेश्चंस उसी से ही आते हैं एंड उसी का पूरा पोर्शन वीडियोस में करते हैं। सो कौन से एग्जांपल्स है? सो सेकंड पॉइंट इज एग्जांपल्स। नंबर वन, दो ही एग्जांपल्स है। नंबर वन, बैलानो ग्लासेस। बैलानो ग्लासेस कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल इज बैलानो ग्लासेस। सेकंड एग्जांपल इज सैको ग्लासेस। So very easy है to remember the example glossus, balanoglossus and saccoglossus. These are the two members of hemichordata. Right. Then इसके बाद का जो पॉइंट बचा है कौन सा? How we classify the members of hemichordata considering basis of classification. Considering basis of classification. क्योंकि इस पॉइंट पे क्वेश्चंस होती ही है। तो कितने बेसिस है? टोटल 6 बेसिस है। नंबर वन इज नोटोकॉर्ड, लास्ट वन इज सेगमेंटेशन। बचे फोर में से कौन से है? फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है बॉडी सिमेट्री, थर्ड है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज सीलो। इन बेसिस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो बैलानोग्लासेस के मेंबर कहां आते हैं? सो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री कंसिडर करेंगे तो दे हैव बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उन लोगों में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लास्ट सीलोम को अगर कंसिडर करेंगे तो सीलोम कैसा है? तो दे आर सीलोमेट, सो आफ्टर ऑल लास्ट में क्या कहेंगे? कंसिडरिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री कौन सी है? बायलैटरल। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द सीलो, सो दे आर सीलोमेट्स। सो ये पूरा होता है हेमिकॉर्डेटा का। जैसे पिछले वीडियोस में हमने इकाइनोडर्माटा पढ़ा था, तो उसमें क्या है? उसमें भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री डिफरेंट है। इकाइनोडर्माटा एडल्ट इकाइनोडर्म शो द radial body symmetry, whereas the larval echinodermata shows the bilateral body symmetry। मतलब दो बॉडी सिमेट्री दिखाते हैं। कौन? इकाइनोडर्माटा के। ये वही उसको यहाँ इकाइनोडर्माटा को कंसिडर करके ये स्टेटमेंट आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। एडल्ट इकाइनोडर्म्स रेडियल, लार्वल इकाइनोडर्म्स बायलैटरल। यहां पर हेमिकॉर्डेटा के मेंबर bilateral difference. So this is all about the hemichordata. Lastly, I will take the review. क्या है हेमिकॉर्डेटा? वर्ड जब आपके सामने आता है तो फर्स्ट, small group of worm-like marine animals. Initially, it was considered as a subphylum of Chordata, but now it is considered as a separate phylum of or separate phylum under non-chordates, and therefore this is the last 10 number phylum under non-chordata. Then body cylindrical है, 3 पार्ट से बनी हुई है। प्रोबोसिस, ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस में 2 पार्ट है, माउथ एंड प्रोबोसिस ग्लैंड। उसमें से प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। देन कॉलर रीजन में अगर आते हैं तो कॉलर रीजन में क्या है? तो कॉलर रीजन में गिल्स है and there is a presence of genital pores, gills, respiratory structure. Then there is a last third part and that aims to the anus and that is long slender trunk that we have discussed. Circulatory system open है, dioecious है, unisexual है, fertilization external है, development indirect है। एग्जाम्पल 2 है
Balanoglossus, sacroglossus, right? And last considering basis क्या है? Organ system, bilateral symmetry, diploblastic, and pseudomite. Here we have completed all the phylums. In the next video, we'll start या बिफोर कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के पहले वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट द हेमिकॉर्डेटा कि हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज hemi due to the presence of or hemichordata is considered as connecting link क्या कहते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक between echinodermata and chordates because hemichordata के बाद chordates ही आते हैं. So hemichordata is considered as a connecting link. क्या है ये कनेक्ट करती है दोनों को इसलिए हेमिकॉर्डेटा इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स. इकाइनोडर्मेटा क्या है तो इकाइनोडर्मेटा आर नॉन कॉर्डेट्स so hemichordata is considered as a connecting link between non-chordates and chordates. Why? Because hemichordata के जो मेंबर है उनमें they show some characters of non-chordates, that is echinodermata, and some characters of chordates. Therefore, it is considered as a connecting link between non-chordates and chordates. Right. So here we have completed all phylums. In the next videos, we'll discuss the chordates.